Students, hope you are doing well. In this video, we will discuss about keywords and questions answers of chapter 10, that is motion and measurement of distances. चूंकि ये चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसलिए मैं न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस के आंसर को भी समझाऊंगी और साथ में क्वेश्चंस को भी हिंदी में समझाऊंगी ताकि आप क्वेश्चन को सही तरीके से समझ पाए और आंसर को भी सही तरीके से कर पाए। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कीवर्ड से। First keyword is circular motion. Circular motion is a movement of an object along the circumference of a circle or rotation along a circular path. Next keyword is distance. Distance is a numerical measurement of how far apart objects or points are. Next keyword is measurement. A measurement is a collection of quantitative or numerical data that describes a property of an object or an event. Next keyword is motion. Motion is the phenomenon in which an object changes its position over time. Next keyword is periodic motion. Motion that repeats itself after some period of time is called periodic motion. Next keyword is rectilinear motion. A linear motion in which the direction of the velocity remains constant and the path is a straight line. Next keyword is SI unit. The International System of Units is a scientific method of expressing the magnitudes or quantities of important natural phenomena. Next keyword is units of measurement. There are 7 base units in the SI system. First, the kilogram kg for mass. Second, the second S for time. Third, the Kelvin K for temperature. Fourth, the ampere A for electric current. Fifth, the mole for the amount of a substance. Sixth, the candela CD for luminous intensity, and seventh, the meter M for distance. Now questions answers. First question, give 2 examples each of modes of transport used on land, water and air. कह रहा है कि इन सबके modes of transport का दो example देना है. So answer, 2 examples of transport modes used on land are buses and cars. Next, 2 examples of transport modes used on water are boats and ships. Next, 2 examples of transport modes used in air are aeroplanes and helicopters. But answer may be variable. Next question, fill in the blanks. First fill in the blanks. 1 meter is dash centimeter. Answer will be 100. Next fill in the blanks. 5 kilometer is dash meter. Answer will be 5000. Next fill in the blanks. Motion of a child on a swing is dash. Answer will be periodic motion. Next fill in the blanks. Motion of the needle of a sewing machine is dash. Answer will be periodic motion. Next fill in the blanks. Motion of wheel of a bicycle is dash. Answer will be circular motion. Now next question. Why can a pace or a footstep not be used as a standard unit of length? कह रहा है कि pace और footstep का standard unit of length के लिए क्यों नहीं यूज किया जाता है? Answer, a pace or a footstep not be used as a standard unit of a length because the length of a pace and footstep vary from person to person. This will lead to confusion. Now next question. Arrange the following lengths in their increasing magnitudes. 1 meter, 1 centimeter, 1 kilometer, 1 millimeter. इन सबको कह रहा है increasing magnitude में arrange करने के लिए. Answer, 1 millimeter, then 1 centimeter, then 1 meter, then 1 kilometer. Now next question. The height of a person is 1.65 meter. Express it into centimeter and millimeter. कह रहा है कि एक person का height 1.65 मीटर है. इस मेजरमेंट को सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में एक्सप्रेस करो. तो हम लोग इस न्यूमेरिकल को गिवन से स्टार्ट करेंगे. सो गिवन इज हाइट ऑफ अ पर्सन इक्वल्स टू 1.65 मीटर, जो कि यहाँ दिया हुआ है. नाउ वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 millimeter. So for centimeter, 1.65 meter equals to 1.65 multiplied by 100 equals to 165 centimeter. And for millimeter, 1.65 meter equals to 1.65 multiplied by 1000 equals to 1650 millimeter. Now next question. The distance between Radha's home and her school is 3250 meter. Express this distance into kilometer.
क्वेश्चन में कह रहा है कि राधा के घर से स्कूल का डिस्टेंस 3250 मीटर है। इस डिस्टेंस को किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है। तो हम लोग गिवन से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। गिवन में लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन राधा's होम एंड हर स्कूल इक्वल्स टू, जो यहाँ दिया हुआ है 3250 मीटर। नाउ वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर। So 3250 meter equals to 3250 upon 1000 and then kilometer। फिर इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 3.25 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, while measuring the length of a knitting needle, the reading of the scale at one end is 3.0 centimeter and the other end is 33.1 centimeter. What is the length of the needle? कह रहा है कि एक नीटिंग नीडल का जब लेंथ मेजर कर रहे थे तो उसके एक एंड पर 3.0 सेंटीमीटर हो रहा था और दूसरे एंड पर 33.1 सेंटीमीटर हो रहा था। तो नीटिंग नीडल का लेंथ क्या है? हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये नीटिंग नीडल है और इसके एक पॉइंट पर 3.0 सेंटीमीटर हो रहा है और दूसरे पॉइंट पर 33.1 सेंटीमीटर हो रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले गिवन लिख लेंगे। इनिशियल रीडिंग ऑफ द स्केल इक्वल्स टू 3.1 सेंटीमीटर, फिर फाइनल रीडिंग ऑफ द स्केल इक्वल्स टू 33.1 सेंटीमीटर। हम लोग को लेंथ निकालना है निडल का, तो उसके लिए फॉर्मूला बना देंगे। द लेंथ ऑफ द निडल इक्वल्स टू फाइनल रीडिंग ऑफ द स्केल माइनस इनिशियल रीडिंग ऑफ द स्केल। फिर दोनों के वैल्यू को पुट कर देंगे। सो 33.1 सेंटीमीटर माइनस 3.1 सेंटीमीटर, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा आंसर 30.1 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस between the motion of a bicycle and ceiling fan that has been switched on। इसमें कह रहा है कि एक बाइसिकल और एक सीलिंग फैन जिसका स्विच ऑन है उसकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को लिखो। सो सिमिलरिटीज, बोथ द व्हील ऑफ द साइकिल एंड ब्लेड्स ऑफ द सीलिंग फैन आर इन सर्कुलर मोशन एंड रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। नाउ डिफरेंसेस, फॉर डिफरेंसेस we have to draw two columns. In first column you have to write points for motion of a bicycle and in second column you have to write points for a ceiling fan. So point for motion of a bicycle has rectilinear motion. For ceiling fan does not possess rectilinear motion. Now next question, question number 9, why would you not like to use a measuring tape made of an elastic material like rubber to measure distance? What would be some of the problems you would meet in telling someone about a distance you measured with such a tape? इसमें कह रहा है कि डिस्टेंस को मेजर करने के लिए रबर जैसे इलास्टिक मटेरियल से बने हुए मेजरिंग टेप का यूज आप क्यों नहीं करना चाहेंगे? इस तरह के टेप से मेजरमेंट करके किसी को बताने में क्या प्रॉब्लम होगी? आंसर, a measuring tape made of elastic material would be stretchable and while measuring the distance between 2 points it might get stretched and would give an incorrect statement. Now next and last question, give two examples of periodic motion. Answer, a branch of a tree moving to and fro and motion of a child on a swing are examples of periodic motion, but answer may be variable. That's it. यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।